શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. શ્રી સતીશભાઈ મળિયા, શ્રી પ્રવીણભાઈ લાખાણી, અનિલભાઈ ભાયાણી, બચુભાઈ દલાલ, બ્રાહ્મણ સમાજવાળા શ્રી જ્યોતિન્દ્રભાઈ દવે જલ્દીથી મંચ પર આવે અને પહેલાં પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યાનું સન્માન કરે અને પછી પારેખ પરિવારના ચારે ચાર ભાઈઓને આપણે પવિત્ર મંચ ઉપર આવું સુંદર ભગવતી કાર્ય કરવા માટે એમનું આપણે સન્માન કરીએ. વિના વિલંબે જલ્દીથી આ વડીલો ઉપર આવે. પ્રકાશભાઈ માટે મેં અગાઉ મેં કીધેલું કે મહારાષ્ટ્રની વિધાનસભા પ્રકાશભાઈને મન સિમેન્ટ, કાચ અને કોન્ક્રીટનું સ્થૂળ મકાન નથી, પ્રજાના સંકલ્પોનું મંગલ ભવન છે. એ વિધાનસભાના ચિત્રવાળી સુંદર મજાનું માનપત્ર ત્યાં સમયના અભાવે વાંચતો નથી. આપણે પ્રકાશભાઈને અર્પણ કરીએ છીએ. આપણે જબરદસ્ત તાળીઓથી વધાવી લઈએ. પારેખ પરિવાર સાથેનો ખૂબ ઘનિષ્ઠ નાતો છે. ખડે પગે આપણે માટે તૈયાર રહે છે. આપણે એમનું સન્માન કરીએ અને એના પછી આવું જ માનપત્ર શ્રી વાડીભાઈ દલાલ, સતીશભાઈ મળિયા, પ્રવીણભાઈ લાખાણી, અનિલભાઈ ભાયાણી, બચુભાઈ દલાલ, જ્યોતિન્દ્રભાઈ દવે જલ્દીથી મંચ પર આવી પહેલાં પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈનું સન્માન કરે. પછી પારેખ પરિવારના સ્તંભ સમા ચારે ચાર ભાઈઓ મહેન્દ્રભાઈ, ચંદ્રેશભાઈ, ભદ્રેશભાઈ અને નિલેશભાઈનું આપણે અભિવાદન કરીએ. એક કામ કરો, આ લખી નાખો તમે, બીજી બે વાત કરી લો. ઘાટકોપરના સ્વામિનારાયણ મંદિરના કોઠારી સ્વામી અને પૂજ્ય દિવ્યપ્રકાશ સ્વામી પધાર્યા છે. પહેલાં પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈનું સન્માન કરે છે. આપણે સૌ જબરદસ્ત તાળીઓથી વધાવી લઈએ. સંતોના વરદસ્ય અર્પણ થાય છે. સરસ્વતી માતાને ખોળે કલમ મૂકીને સુંદર મજાનું માનપત્ર બનાવ્યું છે. એ આશીર્વાદ ગ્રહણ કરો અને રૂકમણી વિવાહના પ્રસંગે આખા પ્રસંગને લાડ લડાવવાને માટે અમારો મખમલી અને મુલાયમ કંઠલો કલાકાર ભાઈ ભાનુ વોરા, સ્વરકેન્દ્રી ગ્રુપના કલાકારો આવી પહોંચ્યા છે. આખા વાતાવરણ એક મસ્ત વાતાવરણ ઊભું થાય, પરમાત્મા રાજી થાય એવું માટે ભાનુ વોરાને વિનંતી કરું, આપ 2 મિનિટ અહીંથી સંબોધન કરો. ભાઈ ભાનુ વોરા. જય શ્રી કૃષ્ણ. લગ્ન ગીત તો પૂજ્યભાઈ જ્યારે અહીંથી ભૂપેન્દ્રભાઈ આદેશ આપશે ત્યારે અમે શરૂ કરશું જરૂર, પણ હું આપને કહેવા એ માટે આવ્યો છું કે હિન્દુસ્તાન નહીં પરંતુ અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડ, યુરોપના ધોળિયાઓ કોઈના પર વિશ્વાસ ન રાખે એ પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈની કથા 8-8 દી જમીન પર બેસીને સાંભળે. અમેરિકામાં ઇંગ્લિશમાં જેમણે કથાઓ કરી છે, સમગ્ર વિશ્વમાં ધર્મનો ઝંડો લઈ પૂજ્ય ડોંગરે બાપા પછી જો કોઈ ભાગવત કથાનું પ્રિય પાત્ર હોય અમારું તો પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ આપ છો. કદાચ વધારે થતું માફ કરજો, પણ આપને કહેવાય એ માટે આવ્યો છું. મા બાપ વિશે, દરેક વિશે બધું, પરંતુ જે દીકરીઓ બેઠી છે એના મા બાપ સાથે બેઠા છો. આપે ઘણા બધાની કથાઓ સાંભળી હશે, પરંતુ રૂક્ષ્મણીજીનો ભગવાનને લખાયેલો પત્ર એ પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પાસે સાંભળવો જીવનનો અમૂલ્ય લાવો છે. અમે જ્યાં જ્યાં ભૂપેન્દ્રભાઈની કથા હોય ત્યાં ત્યાં અમે અવશ્ય આ સાંભળીએ છીએ. મારી આપને ખાસ વિનંતી છે, આ વચ્ચે થોડુંક જે આવી ગયું, કારણ કે જે લોકો પધાર્યા હોય, આપણે જેને હોનાની હાંકલે બાંધીને લાવો ન આવે એવા મહાનુભાવો જ્યારે આંગણે આવ્યા, અતિથિ દેવો ભવ, સત્કાર જરૂર કરવો પડે. કથાનો એક જબરજસ્ત માહોલ એવો જામી ગયો હતો, અમે એ બાજુ બેઠા બેઠા પાછા સાંભળતા હતા. પણ ફરી આપને વિનંતી કરું છું કે પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈની પુસ્તિકા આપને દરેક આપી છે ને, જે ચોપડી, એમાં ભીષ્મ સ્તુતિ આપણે બેસીને સાથે કરેલી, એમાં આ પત્ર છે. તો આવો લાવો જીવનમાં ક્યાંય નહીં મળે તમને, ત્યારે ધ્યાનથી સાંભળજો એવી મારી આપને એક ઈચ્છા છે. પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈને મેં વિનંતી કરી કે ભલે મોડું જે થાય કાંઈ વાંધો નહીં, આપ કયો ત્યારે લગ્ન ગીત ગાશું, પણ રૂક્ષ્મણીજીનો પત્ર આખો ઘાટકોપરવાના આજે પહેલી વાર લાભ મળે એવું આપ કરો. આપનો આભાર. થેન્ક યુ. પારેખ પરિવારના નિમંત્રણને માન આપીને શૈલેષભાઈ જૈન અને RS શાહ અહીં પધાર્યા છે. જલ્દીથી ઉપર આવીને પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈના વરદસ્તે આશીર્વાદ ગ્રહણ કરે. પારેખ પરિવારના નિમંત્રણને માન આપી, ખાસ વિનંતીને માન આપીને પૂજ્ય જે હજારો કામોની વચ્ચે આપણી વચ્ચે પધાર્યા. હવે અન્ય રોકાણ હોવાથી એવો હા
અન્ય રોકાણ હોવાથી પૂજ્ય જે આપણી વચ્ચેથી વહેલા વિદાય લેશે. એમના સદા સર્વદા આશીર્વાદ દસે આંગળીએ પારેખ પરિવાર ઉપર છે. શ્રી શૈલેષભાઈ જૈન, એમ કોમવાળા, આર.એસ. શાહ, તેઓ જલ્દીથી સ્ટેજ પર આવી ભૂપેન્દ્રભાઈને હાથે આશીર્વાદ ગ્રહણ કરે. પૂજ્ય આચાર્ય ચરણ પારેખ પરિવારના નિમંત્રણને માન આપી હજારો કામની વચ્ચે થોડી ક્ષણો માટે પધાર્યા. આપણે સૌ કૃતાર્થ થયા, બળભાગી થયા અને હવે એમના અન્ય રોકાણ હોવાથી આપણી વચ્ચેથી તેઓ વિદાય લેશે. એમના શ્રી ચરણોમાં આપણા સૌના દંડવત ચરણ સ્પર્શ. પૂજ્ય આચાર્ય ચરણ ભગવતીની મુખી પોથીના દર્શન કરે છે. પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈનું સન્માન કરે છે. આપણે સૌ જબરદસ્ત તાળીઓથી વધાવી લઈએ. પારેખ પરિવાર સાથે એમનો ઘનિષ્ઠ નાતો છે. હવે આપણી વચ્ચેથી એવો વિદાય લે છે. હવે દુનિયાભરની સ્વિચ ઓફ કરીને પરમાત્માના લગ્નમાં આપણે બારાતી તરીકે સામેલ થઈએ, કન્યા પક્ષમાં પણ સામેલ થઈએ અને લાખેણું લાવો લઈએ. ભાઈ મારો ભાનુ બોરા અને એના ચુનંદા કલાકારો આવ્યા છે પરમાત્માના લગ્નમાં લાડ લડાવવા માટે. આપના દરદાગીનાનું અને એના કરતાં પણ કિંમતી આપના બાળકોનું ધ્યાન રાખજો કે જેથી કોઈ લૌકિક જાહેરાત આ મંચ પરથી કરવી ન પડે. અને પછી સૌ બાજુના ખંડની અંદર બધાને માટે મહાપ્રસાદની વ્યવસ્થા કરી છે, એ પ્રસાદ લેજો. મનુભાઈ શાહ ન્યૂ બોમ્બેથી જાડી જાન જોડીને હિતેશભાઈ સાથે આવ્યા છે. કન્યા પક્ષમાં પારેખ પરિવારના લોકો લાખેણું લાવો લઈ રહ્યા છે. હાજી, કથા શ્રવણમાં થોડો વિક્ષેપ થયો, વિલંબ થયો, એને માટે અમે પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈના અને આપ સૌના ક્ષમા પ્રાર્થી છીએ. કોઈનું નામ શરચૂકથી રહી ગયું હોય તો દરગુજર કરશો. ભૂપેનભાઈ પંડ્યાજી, નમસ્કાર. આજે એક અઠવાડિયાથી જે પ્રસંગ ઉજવાઈ રહ્યો છે તે એકલા પારખ કુટુંબનો ગૌરવ નથી, અમારા જેવા સંબંધીઓની છાતી ફૂલે છે. મહેન્દ્રભાઈ, ચંદ્રેશભાઈ, ભદ્રેશભાઈ, નિલેશભાઈ ખૂબ જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ રાખે છે. જેમ કમાય છે એમ વાપરે છે અને એને માટે અમારા જેવા સેવકો ખૂબ જ અભિમાન લઈએ છીએ. જય જિનેન્દ્ર. બસ હવે કથા ગંગામાં આગળ વધીએ. પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈના શ્રી ચરણોમાં પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી નમસ્કાર. ચાલો જઈએ પરમાત્માની જાનમાં. જબરદસ્ત તાળીઓથી આપણે જય ઘોષ કરીએ. आत्मीय स्वजनों, जय श्री कृष्ण. सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स परिवार द्वारा आयोजित वैश्विक सामूहिक ऑनलाइन श्रीमद् भागवत सप्ताह जो पितृपक्ष में 11 से 17 सितंबर 2022 में निर्धारित हुई है, उसका विश्व भर से इतना सुंदर प्रतिसाद आ रहा है. हनुमान जयंती 15 अप्रैल के आसपास तक 500 से अधिक पोथी रजिस्टर हो चुकी है. प्रिय स्वजनों, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में कर्तव्य है कि जिन पितरों ने हमारे परिवार से, हमारे बीच में से विदाई ली है, शरीर त्याग दिया है, उनके श्रेयार्थ श्रीमद् भागवत सप्ताह करना ये हमारा कर्तव्य बनता है संतानों के रूप में. पितरों के लिए आप करना चाहें, स्वयं के लिए करना चाहें, आत्मकल्याण जिसको कहते हैं. परीक्षित को जब पता चला कि मृत्यु समीप है तो बाद के लोग कथा करें ऐसी प्रतीक्षा क्यों करें, हम स्वयं अपनी कथा का श्रवण न कर लें, सबसे श्रेष्ठ होता है वो. तो पितृश्रेयार्थ, आत्मकल्याणार्थ या भागवत भक्ति के लिए किसी भी हेतु से आप इसमें जुड़ना चाहें, आपका स्वागत है. बता दूं, यह संपूर्ण निःशुल्क है, इट्स टोटली फ्री. सत्कर्म परिवार और कैडिला फार्मास्यूटिकल परिवार की ओर से यह समाज सेवा का अध्यात्म के क्षेत्र में अपना योगदान है. प्रिय स्वजनों, ये सारा कार्यक्रम YouTube चैनल पूज्य श्री भाई पर प्रसारित होगा, इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अभी इसी समय YouTube चैनल पूज्य श्री भाई को सब्सक्राइब कर लें. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी. लिंक पर क्लिक करोगे कि पूरा गूगल फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपकी पोथी रजिस्टर हो जाएगी.
प्रिय स्वजनों, जहाँ जहाँ भी विश्व भर में आपके स्वजन रहते हो, आप स्वयं तो पोथी रजिस्टर कराइए, अपने सभी स्वजनों को भी प्रेरणा दीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है प्रिय स्वजनों। तो आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, अपने पितरों के प्रति अपना ऋण चुकाने के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए इस विराट विशाल वैश्विक भागवत सप्ताह में सम्मिलित हों। गूगल फॉर्म की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, फॉर्म भरें। और जो कोई जानकारी आप यदि प्राप्त करना चाहें तो संस्था के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ स्क्रीन पर उपलब्ध हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए पोथी रजिस्टर कराइए। जय श्री कृष्ण। श्री शुक उवाच राजासीद् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्रः कन्यैका च वरानना। રાસલીલા પછીના જે અનેક પ્રસંગો, એમાં કંસે મોકલેલા અક્રૂરજી श्री कृष्ण ने व्रजથી मथुरा पधरावी लाव्या। श्री कृष्ण ने मथुरा में आकर के कंस का वध किया, उग्रसेन को गद्दी पर बिठाए। परमात्मा स्वयं सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्याभ्यास के लिए गए। बहुत कम समय में 14 विद्या और 64 कलाएं प्राप्त कर ली। गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुजी के पुत्र को वापस ला कर दिया पंचजन राक्षस के पास से। मुझे विनती की गई है कि अब की कथा मैं हिंदी और इंग्लिश में बताऊं, क्योंकि बहुत सारे मेहमान बाहरगांव से आए हुए जो गुजराती भाषा को नहीं जानते, और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ की यंग जनरेशन, those who understand only English, unfortunately. So, प्रश्न ऐसे, और मुझे विनती की गई है कि पूरी कथा अब मैं हिंदी और इंग्लिश में, અને આપણને ક્યાં ફરક પડે છે ભાઈ, ભાષા ને શું વળગે ભૂર, જે રણમાં જીતે તે શૂર। भाषा से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो केवल परमात्मा के विचार लोगों तक पहुंचाने हैं। चाहे वो गुजराती भाषी हो, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, केवल सद्विचार लोगों तक पहुंचाने हैं। गुरुदक्षिणा के रूप में पुत्र को लौटाया। तत्पश्चात प्रभु मथुरा पधारे। उद्धव जी का बहुत सुंदर प्रसंग। उद्धव जी गोपियों को देने गए थे ज्ञान, लेकर वहां पहुंचकर उनको लगा कि यहां पाने जैसा बहुत कुछ है। प्रेम लक्षणा भक्ति को समझा है ब्रज में रहकर। इसलिए महात्माओं बड़ी भाव से कहते हैं कि हमारे ब्रज में रहकर ऊधो सीधो भयो है। ज्ञान का अहंकार चला गया, प्रेम की महिमा को समझा पाया। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में जरासंध के द्वारा मथुरा पर 17 बार आक्रमण, मथुरा के यादवों ने उसे हराया। 18वीं बार वो आया तो अकेला नहीं आया, काल यवन की मदद लेकर आया। आज प्रातः काल ही गुजराती के बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मैगजीन चित्रलेखा के प्रतिनिधि के साथ मैं इंटरव्यू दे रहा था। उसमें ये बहुत डिटेल में चर्चा हुई, वो कुछ आर्टिकल तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर। काल यवन को अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि वो राक्षस था। नहीं, वो राक्षस नहीं था। जिन्होंने संशोधन किया है भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, वो कहते हैं कि काल यवन ग्रीक राजा था। अपने देश के
मामलों को सुलझाने के लिए किसी विदेशी की मदद लेकर आने वाला पहला देशद्रोही जरासंध था। कालयवन की मदद लेकर आया। कालयवन की जो सेना आई है, मथुरा के लोगों में मीटिंग हुई कि अभी तक अपने देश के लोग कैसे युद्ध करते हैं वो हमें पता है, लेकिन ये विदेशी लोग कैसे युद्ध करते हैं वो हमें पता नहीं। जीत भी जाएंगे तो भी एक बात तो निश्चित है कि युद्ध हमारी भूमि पर खेला जा रहा है, मथुरा की भूमि पर, और उसमें जो युद्ध होगा तो नुकसान तो हमें ही होगा। भले जीतें फिर नुकसान तो होगा ही। इस नुकसान को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, किसी भी उपाय से यह युद्ध टल जाए। जरासंध युद्ध क्यों कर रहा था? न उसे मथुरा की गद्दी में रस था, न मथुरा की संपत्ति में रस था, उसे केवल कृष्ण चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मथुरा से, इस राष्ट्र से मैंने प्रेम किया है, इस राष्ट्र की संस्कृति से मैंने प्रेम किया है, यदुवंश से मैंने प्रेम किया है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को समस्या हो। आई विल फ्ली द बैटलफील्ड, मैं रण को छोड़कर चला जाऊंगा। प्यारे भक्तजनों, दुनिया भर में यह एकमात्र व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसने रण छोड़ने से पहले अनाउंसमेंट की, क्योंकि अधिकतर लोग जो रण छोड़कर भाग जाते हैं वो छुप के चले जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, और ऐसे लोग मायूस कहलाते हैं, डरपोक कहलाते हैं, बुज़दिल कहलाते हैं। दुनिया का एकमात्र महापुरुष जो रण छोड़ने से पहले अनाउंसमेंट करता है, दूसरी सुबह भगवान श्री कृष्ण, भागवत जी के शब्दों में अगर कहूं तो पद्ममाली निरायुध, केवल कमल के पुष्प की माला पहनी हुई है, कोई शस्त्र हाथ में धारण नहीं किया, रण छोड़कर चले। तो दुनिया ने कहा, रण छोड़ राय की, परोपकार की भावना से गए, इसलिए रण छोड़ राय की जय। जरासंध ने पीछे, कालियवन ने पीछा पकड़ा, मुचकुंद राजा का बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया, उसको मरवाया। बाद में बलराम जी भी आ पहुंचे, बहुत दौड़ धूप हुई। भगवान कृष्ण ने सोचा, मैं धर्म संस्थापना का कार्य करने आया हूं, ऐसे दौड़ धूप करता रहूंगा तो धर्म संस्थापना कब होगी? कोई भी कंस्ट्रक्टिव कार्य समाज में करना हो तो कहीं स्थिर होकर रहना पड़ता है। भगवान ने सोचा एक नगर बसाएं, द्वारामती का प्रदेश पसंद किया, विश्वकर्मा जी को आर्किटेक्ट बनाए। संपत्ति की भी आवश्यकता पड़ती है, संपत्ति जीत कर लाए युद्ध में, और ये सारी संपत्ति द्वारिका के विकास के पीछे लगा दी। सुवर्णमयी द्वारिका नगरी बन गई। नगर तैयार हुआ तो स्वाभाविक है कृष्ण का घर भी तैयार हुआ, महल बन गया। नगर तैयार है, घर तैयार है, श्री कृष्ण की उम्र भी पहुंची है 24-25 के आसपास, वर भी तैयार है। तो प्रतीक्षा किस बात की हो रही है? कन्या पधरावो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, फिर तो इन दोनों भाइयों का ब्याह भी हुआ। रैवतक पर्वत की पुत्री रेवती जी के साथ बलराम जी का ब्याह हुआ। ये रैवतक पर्वत मतलब गिरनार। गिरनार पर्वत का संदर्भ वेदों में रैवतक पर्वत से है, रैवतक नाम से। और कुंडिनपुर के भीष्मक राजा की इकलौती कन्या रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण अपने उसके विवाह के समय हरण करके ले आए थे। दोनों भाइयों के ब्याह हुए। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान के विवाह की कथा एक लाइन में, विवाह का उत्सव मनाने के लिए हम इतने उत्सुक हैं, तो वो जो कथा है, मूल जो सार है, तत्व है, उस पर तो भी तो कुछ प्रकाश डालिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन राजा सीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ के राजा थे भीष्मक। 5 पुत्र थे उनके, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 5 के नाम याद रह गए ना? वेरी गुड। अब आगे नहीं, कोई बात नहीं, बड़े भैया का नाम याद रखना, रुक्मी। और 5 भाइयों के बीच एक बहन है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी में सौंदर्य, बुद्धि और पराक्रम तीनों का समन्वय हुआ था। वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। अ लेडी हु इज ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट,
and brave at the same time, very rare. रुक्मिणी में ये तीनों का समन्वय था। 15, 16, 17 वर्ष की आयु में वो अपने पिता के साथ बैठती सभा में। राजा की सभा है, तरह तरह के लोग आके तरह तरह की बातें सुनाते, और उस समय भगवान श्री कृष्ण छा गए थे समग्र आर्यावर्त पर। कोई भी कहां से भी आए, कोई भी बात करे, उसमें कृष्ण की प्रशंसा होती थी। रुक्मिणी स्टार्टेड थिंकिंग, हु इज दिस कृष्ण? एवरीवन हु कम्स फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस होल कॉन्टिनेंट इज प्रेजिंग हिम। In her heart she decided, whenever I will marry only and only to Lord Krishna and none other. रुक्मिणी की 18 वर्ष की आयु हुई। उसके लिए स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। स्वयंवर शब्द को भी समझना, स्वयं मतलब खुद, वर पति, अपना पति खुद चुनना, उसको कहते हैं स्वयंवर। और उस समय में कन्याओं को यह अधिकार था। यह बात मैं बहुत सावधानी से बोलता हूं, क्योंकि कन्याओं को समझने के लिए बहुत, ये बात इतनी समाज में फैल गई अब मेरी कथा के बारे में कि रुक्मिणी विवाह तो अवश्य सुनना, उन बेटियों को बहुत समझने जैसा होता है, युवाओं को बहुत समझ, तो यंगस्टर्स बहुत आते हैं। 3 बजे से आकर बैठ गई हैं कन्याएं। शुरुआत में जो रासलीला की कथा आधी समझ में आती, आधी नहीं आती, आधी बम पर जाती है, लेकिन जितनी समझ में आती है उतना लगता है कि यार ही इज टॉकिंग सेंस, ही इज कूल यार। और कन्याएं ऐसी बैठती हैं, देखो बेटी बैठे हैं ना ऐसे, मत बेस नहीं बेसी, डोंट चेंज, यस। तो ऐसी बैठी हैं कन्याएं। और जब मैं फिर स्वयंवर के उसमें फिर कन्या सोचती हैं, अब जब रुक्मिणी विवाह की बात आती है, कन्या की आंखें चमकती हैं। हाँ, उसे पता चलता है मम्मी क्यों मुझे आज फोर्स करके ले आई है। एक बात है भाई, दिस जनरेशन इज वेरी शार्प, आई लव दिस जनरेशन। एक वाक्य बोलो और आगे के 4 वाक्य क्या होंगे वो उनको पता चल जाता है, वेरी शार्प। जब रुक्मिणी विवाह की पता आती है तो उनका था, हाँ, व्हाई मम्मी हैज ब्रॉट मी टुडे, ओके लेट्स लिसन टू दिस, व्हाट ही हैज टू से अबाउट इट। उसमें जब मैं स्वयंवर की बात करूं ना, कि उस समय में कन्याओं को अपना पति पसंद करने का अधिकार था। कन्या अपने पास में बैठी मम्मी को, मॉम लिसन टू दिस, यू हैव ब्रॉट मी हियर टुडे, स्वयंवर, इट्स माई लाइफ एंड आई विल मेक अ मैस ऑफ इट, आई वोंट इवन लेट यू डू दैट। हमारा अधिकार। Sure enough, in those years, girls did have a right to choose their own husband, but those husbands were not chosen in the dandiyas during Navratri. Those husbands were not chosen in the picnics of college. There were a set procedure for choosing their own husbands. There were 2 types of swayamvars. A, कन्या जब 18 साल की हो जाए तो माता पिता ही स्वयंवर की घोषणा करते थे। पूरे राज्य में से, पूरे राष्ट्र में से युवक राजकुमार सब आते, कन्या हाथ में वरमाला लेकर निकलती, और जो युवक उसको पसंद आए, थोड़ा सा मन में इच्छा हो, पीछे से दासी उस युवक का वर्णन शुरू करती कि ये राजकुमार, इसका नाम ये है, उसके पिता का नाम ये, इसके दादा का नाम ये, इसके परदादा का नाम ये, उनका गोत्र ये। बहुत सुंदर प्रश्न आया है आज, बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं रुक्मिणी विवाह के बारे में ही। हमारी भावना बेन पारेख ने प्रश्न पूछा है कि भाई श्री, गोत्र का अर्थ क्या होता है? क्या बेटे बेटी के विवाह के समय गोत्र देखना आवश्यक है? अवश्य आवश्यक है। और कुछ, अब रुक्मिणी के पत्र में तो मैं बात बताऊंगा, लेकिन गोत्र अवश्य देखना, क्योंकि व्हाट डज गोत्र मीन? गोत्र लिटरली मीन्स आपका परिवार, योर फैमिली लीनिएज। भारतीय संस्कृति ने कहा है कि पूरे जितने भी हम लोग हैं, सच पूछो तो पूरी मानव सृष्टि है, वो ऋषियों की संतानें हैं। तो आपके जो गोत्र का नाम है वो ओरिजिनली किसी न किसी ऋषि का नाम है।
और जो गोत्र आप अपना समझते हैं, अगर आपको याद हो, अगर जिसको किसी को अपना गोत्र याद नहीं तो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं आपका काश्यप गोत्र, क्योंकि आप कश्यप ऋषि की संतान हैं। कथा में आ गए ना 8वें स्कंद में, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दीति और अदिति, दीति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य देव। अब काश्यप गोत्र के आप समझ लो, आप देव हो या, क्योंकि संसार में जितने देव और दैत्य जो भी हैं वो कश्यप के ही हैं, अल्टीमेटली वो ही है। लेकिन संभव है अगर आपको अपना गोत्र याद हो तो गोत्र इज योर 4 फादर करते जाए तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर आपके वो हैं। एक ऋषि का नाम, एक गोत्र की संतान सच पूछो तो भाई बहन हुए, इसलिए एक गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो इट इज लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर मैरिंग ईच अदर एंड दैट्स नॉट करेक्ट एंड दैट डज नॉट हैव, मैं केवल भावुकता की बात नहीं करता, मैं साइंटिफिकली बात करता हूं। जब नजदीक के गोत्र के लोग या तो एक गोत्र के लोग रिलेटिव्स अगर एक दूसरे में ब्याह करने लगे तो दैट कॉजेस जेनेटिक डिफॉर्मेशंस। कम्युनिटी के अंदर 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 ब्याह होने लगे, संशोधन करके विश्व में ऐसी कई कम्युनिटियां हैं जहां अंदर अंदर ब्याह होते हैं, इससे कई डिफॉर्मेशंस आने लगे। एक समय ऐसा था, आज जिसको हम लोहाना कम्युनिटी कहते हैं, लोहराणा, राम के वंश के हैं वो लोग, रघुवंशी हैं, लेकिन एक समय आज से 500-700 वर्ष पहले अंदर 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 ब्याह बहुत होने लगे थे उनमें, क्योंकि वॉरियर कम्युनिटी, पुरुष बड़ी संख्या में मृत्यु पाते युद्ध करते समय, क्योंकि बड़ी ब्रेव कम्युनिटी है, हिम्मतवर कम्युनिटी है ये। पुरुषों की संख्या कम हो गई तो स्वाभाविक है कम्युनिटी कम हो गई, और कम्युनिटी कम हो गई तो अंदर 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 ब्याह होने लगे। इसके वजह से लोहाना कम्युनिटी में आज भी देखा जाता है ब्लड थैलेसीमिया का प्रॉब्लम लोहाना कम्युनिटी, उसमें भी जो कच्ची लोहाना है उसमें ज्यादा है, संशोधन करेली बात, वहां ज्यादा है परसेंटेज वाइज थैलेसीमिया, क्योंकि ये जेनेटिक डिफॉर्मेशन की वजह से हुआ। ऐसी दूसरी कम्युनिटी, हम जो बंबई में रहते हैं हमें पता है, पारसी कम्युनिटी, बहुत छोटी कम्युनिटी रह गई। इतिहास के रूप में कहता हूं, जब वो आए यहां पर सैकड़ों वर्ष पहले संजाण में उतरे गुजरात में, और उस वक्त संजाण के राणा के पास गए, कहानी आपको पता होगी। राणा ने कहा मेरे पास विदेशियों के लिए समय जगह नहीं है मेरे राज्य में, क्योंकि अनुभव था ना, बहुत सारे विदेशी आए थे, अलग अलग हूण आए थे, कुशान आए थे, ग्रीक आए थे, ब्रिटिश आए थे, मुगल आए थे, तुगलक, बहुत सारे आए थे, और उन्होंने जो देश में लूट मचाई थी ये संजाण के राणा ने देखा, तो उसने कहा नहीं विदेशियों के लिए मेरे पास जगह नहीं है, बड़ी समस्या होती है यहां पर। वो कैसे कहना, क्योंकि एक तरफ आतिथ्य भाव है, सीधे तो ना नहीं कह सकते, तो उसने प्रतीकात्मक रूप में भेजा, दूध का प्याला भेजा है छलोछल भरा हुआ। पारसी जो आए एक बोट में आए थे और उनके धर्मगुरु भी साथ में थे, दूध का प्याला भेजा कहलाने के लिए कि देखिए बिल्कुल जगह नहीं मेरे पास, लेकिन वो धर्मगुरु भी विचक्षण थे, उन्होंने चीनी डाली, अंदर शुगर डाली, हिलाई और वो प्याले को वापस भेजा। राजा ने, संजाण के राणा ने जब वो चखा, पता चला मीठा है, समझ गए वो भी। संदेश ऐसा भेजा था कि हम आपके लिए समस्या नहीं करेंगे, हम आपकी प्रजा में मिलजुल कर रहेंगे, आपकी प्रजा की मिठास को बढ़ाएंगे। संजाण के राणा ने जगह दे दी, लेकिन उस वक्त कुछ शर्त हुई, उसमें 2 शर्त आज भी पारसी कम्युनिटी पालन कर रही है। अब तो पूरे देश काल बदल गए, फिर भी वो पालन कर रही है। एक, तुम किसी का धर्मांतर नहीं करोगे, क्योंकि अभी तक जो आए थे बहुत लोगों ने किया था, ब्रिटिशर्स ने, क्रिश्चियनिटी ने, इस्लाम बहुत किया था। इन्होंने कहा तुम किसी का धर्मांतर नहीं करोगे, उन्होंने वचन दिया हम नहीं करेंगे धर्मांतर, ये पहले बात करें। और दूसरी बात कि तो उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्मस्थान में हम किसी को आने ही नहीं देंगे। इसलिए आज भी देखना, पारसी की अग्यारी के पास जाओगे वहां बोर्ड लगा होगा, नन अदर देन पारसीज आर अलाउड इन। ये उनका अहंकार नहीं है, लेकिन ये उनका वचन है कि हमारे धर्मस्थान में किसी को आने नहीं। तो धर्मांतर की बात ही नहीं हुई।
और दूसरी बात, प्यार से रहेंगे, लेकिन उसकी क्या हुआ कि अंदर अंदर ब्याह होते ले गए, वो कम्युनिटी को भी जेनेटिक। मेरे कहने का आशय, गोत्र में अंदर अंदर विवाह नहीं होने चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर द प्रोजेनी। तो भावना बेन, તમારા પહેલા પ્રશ્નનો તો જવાબ આવી ગયો। गोत्र देखा जाता था, उसका ननिहाल देखा जाता था, कौन से गुरु का शिष्य है वो देखा जाता था, ये राजकुमार कितने युद्ध लड़ा, कितना जीता, कितना हरा, उसका राज्य कितना बड़ा है, उसकी संपत्ति कितनी है, सब कुछ देखा जाता था। और ये सब कुछ देखकर कन्या को अगर लगे कि आई वॉन्ट टू स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ विद दिस जेंटलमैन, शी वुड गार्लैंड हिम एंड अकॉर्डिंगली शी वुड गेट मैरिड टू हिम। लेकिन उसके लिए भी विधि तो अवश्य होती थी। और दूसरी प्रक्रिया थी स्वयंवर की, कोई शर्त रखी जाती थी। उस समय की कन्या सोचती कि मेरा ब्याह किससे हो, कोई समर्थ व्यक्ति से हो। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू एनी टॉम डिक एंड हैरी। ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो जिसने कभी तक न किया हो, अनयूजुअल वैलर, अनयूजुअल पराक्रम कुछ करके दिखाए। रामायण में सीता जी ने शर्त रखी, शिव धनुष्य का भंग करे वो मेरा पति। महाभारत में द्रौपदी ने शर्त रखी, मत्स्यवेध करे वो मेरा पति। देखिए, और उसमें भी ध्यान रखना, कर्ण आया है पहले मत्स्यवेध करने के लिए, और कर्ण इतना प्रभावी था कि कर्ण जैसे खड़ा हुआ लोगों ने सोचा द्रौपदी का ब्याह हो गया, क्योंकि कर्ण विल डू दिस। लेकिन जैसे ही कर्ण धनुष्य उठाने गया, द्रौपदी ने कह दिया, मैं सूत पुत्र से ब्याह नहीं करूंगी। जिसकी फैमिली लीनिएज पता नहीं है, द सोसाइटी डज नॉट नो अबाउट हिज पेरेंट्स, उसके बचपन में कैसे संस्कार मिले ये हमें पता नहीं है, एंड हेंस आई विल नॉट गेट मैरिड टू हिम इवन इफ ही डज दिस, इवन इफ ही फुलफिल्स दिस कंडीशन। सो फैमिली वैल्यूज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रुक्मिणी के स्वयंवर की जब बात चली, रुक्मिणी को पता चला कि रुक्मिणी मन ही मन भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, तो रुक्मिणी ने स्वयंवर कैंसल कर दिया। रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल से कर दी गई। शिशुपाल वॉज अ फ्रेंड ऑफ रुक्मी। रुक्मी हैड डिसाइडेड दैट आई विल गेट मैरिड माई सिस्टर विथ एनीबडी except Krishna, and Rukmini had decided, I will marry only to Krishna and none other. सगाई हो गई, विवाह का दिन भी तय हो गया। रुक्मिणी कहती है मुझे शिशुपाल से ब्याह नहीं करना, मुझे तो कृष्ण से एक होना है। रुक्मी सेज नथिंग डूइंग, मैं जो कहता हूं वही होगा। 5 में से एक भाई, ये रुक्मी ने ही विलन का काम किया रुक्मिणी के स्वयंवर में, रुक्मिणी के विवाह में। कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो मजाक में मैं कहता हूं, हिंदी फिल्म देखना, उसमें हीरोइन का भाई विलन ही होता है। ये कहानी हमारे यहां 5000 साल पुरानी है। रुक्मिणी के आसपास 15-20 दासियों को रखा गया। इट वॉज अ वर्चुअल इम्प्रिजनमेंट फॉर हर। वो महल छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी, और जहां भी जाती दासियां साथ में रहती। विवाह का दिन समीप आ रहा है। रुक्मिणी ने सोचा मुझे शिशुपाल से ब्याह नहीं करना, मुझे तो कृष्ण से ब्याह करना है। उसने सोचा कृष्ण मुझे लेने के लिए आए तो कितना अच्छा हो। लेकिन कृष्ण कैसे आए? कृष्ण डजंट इवन नो अबाउट हर टिल येट। अभी तक तो ये रुक्मिणी का वन वे ट्रैफिक था ना। अपने हृदय की भावना प्रभु को पता चले, इसलिए रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र लिखा है, सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ में दिया और उसे कहा कि यह प्रेम पत्र आप द्वारिकाधीश तक पहुंचाएं। सुदेव ब्राह्मण ये प्रेम पत्र लेकर के द्वारिकाधीश के पास जा रहे हैं। प्यारे भक्तजनों, तात्विक अर्थ समझ लेना। कुंडिनपुर हमारा शरीर है, इट्स अवर बॉडी। उसमें भीष्मक ये हमारा जीवात्मा, मैं, आप, हम सभी भीष्मक हैं। हम सभी के 5 पुत्र हैं। कौन से? 5 इंद्रियां, जिसके साथ, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम सांसारिक व्यवहार चलाते हैं। और हम सभी की एक पुत्री है रुक्मिणी, बुद्धि। मैंने भीष्म स्तुति में भी कह दिया है, बुद्धि।
बुद्धि जब भगवान के बारे में सुनती है, प्रभु की कथा सुनती है, प्रभु के गुण सुनती है, स्वाभाविक है प्रभु के गुणों से प्रकाशित यह बुद्धि प्रभु से प्रभावित होती है और प्रभु चरणों में समर्पित होने का निश्चय करती है। तो बुद्धि तो तय कर लेती है मैं भगवान की हो जाऊं, लेकिन रुक्मी वो जो भाई है ना बहुत नड़ता है, विषय इंद्रियां बहुत नड़ती हैं, वो प्रभु को समर्पित नहीं होने देता। वो क्या चाहता है? रुक्मी चाहता है कि रुक्मिणी का ब्याह शिशुपाल से हो। शिशुपाल शब्द का अर्थ भी समझना, शिशु मतलब बच्चे, पाल पाड़, छोकरा पाड़, बस तुम बच्चों से ही खेलते रहे, तू सांसारिकता से बाहर आ ही मत। तो विषय रूपी भैया जो रुक्मी है, जो विघ्न कर रहा है रुक्मिणी के ब्याह में, वो एक ही काम करता है, रुक्मिणी को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं होने देता, वो रुक्मिणी को सांसारिक प्रवृत्तियों में लगाए रखता है। बस शिशुपाल, बच्चों के साथ खेल। बस रुक्मिणी क्या करती है? ये बुद्धि प्रेम पत्र भेजती है। किसके हाथों? सुदेव ब्राह्मण। ये सुदेव ब्राह्मण गुरु का प्रतीक है। प्रेम पत्र में 7 श्लोक हैं पुस्तक में अपने पास। ये प्रेम पत्र है 48वें पन्ने पर, पेज नंबर 48। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों में यह प्रेम पत्र बहुत समझने जैसा है। विश्व भर के लोगों ने इस प्रेम पत्र को सराहा है, अपने जीवन में आचरण किया है और जीवन को धन्य बनाया है। बहुत कुछ सीखने जैसा इसमें से। लौकिक अर्थ में देखो तो कन्या विवाह के योग्य हो गई हो, सही पति न मिलता हो, इफ शी इज लुकिंग फॉर अ राइट हस्बैंड बट अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट गेटिंग वन, तो ये पत्र का अनुष्ठान करें। अखंड रूप से श्रद्धा पूर्वक 6 महीने तक ये अनुष्ठान करोगे। 10 में से 8 केसेस में पाया गया है कि कन्या को योग्य पति मिल जाता है। अनुष्ठान की विधि, हो सके तो सुबह शाम दोनों समय, न हो सके तो एक समय। कन्या स्नान करके स्वच्छ रेशमी वस्त्र पहनकर अपने इष्टदेव के सन्मुख शुद्ध घी का दिया करे, अगरबत्ती प्रज्वलित करे, स्पष्ट उच्चार से और अर्थ समझकर यह 7 श्लोकों का पाठ करें। गिन के 2 मिनट लगते हैं ये 7 श्लोक बोलते हुए, लेकिन श्रद्धा से अनुष्ठान करने से अवश्य मन की इच्छा पूर्ण होती है। चलो ये तो सांसारिक अर्थ हुआ। आध्यात्मिक रूप में यहां कई लोग ऐसे भी बैठे हैं, वो कहें अनुष्ठान की विधि, हो सके तो सुबह शाम दोनों समय, न हो सके तो एक समय। कन्या स्नान करके स्वच्छ रेशमी वस्त्र पहनकर अपने इष्टदेव के सन्मुख शुद्ध घी का दिया करे, अगरबत्ती प्रज्वलित करे, स्पष्ट उच्चार से और अर्थ समझकर यह 7 श्लोकों का पाठ करें। गिन के 2 मिनट लगते हैं ये 7 श्लोक बोलते हुए, लेकिन श्रद्धा से अनुष्ठान करने से अवश्य मन की इच्छा पूर्ण होती है। चलो ये तो सांसारिक अर्थ हुआ। आध्यात्मिक रूप में यहां कई लोग ऐसे भी बैठे हैं, वो कहेंगे कि हम तो सब निपटा चुके, अब तो हमारे लिए कोई काम का नहीं रुक्मिणी का पुत्र। अरे आपके लिए तो बहुत काम का है। अलौकिक अर्थ में कहें तो सांसारिक संबंधों से तृप्ति आ गई हो और अब एक ही इच्छा हो कि हे प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ो, परमात्मा के चरणों में इच्छा हो समर्पित होने की, तो इस मंत्र का अनुष्ठान करना। कई लोग आते हैं, कई बार कहते हैं कि गुरुदेव अब तो सब कुछ मिल गया, संपत्ति है, परिवार भी अच्छा है, बच्चे बिजनेस बहुत अच्छा संभाल लेते हैं, बेटियों का ब्याह हो गया, अपने ससुराल में सुखी हैं, सब कुछ अच्छा है, बस सिर्फ इतनी आशीर्वाद दीजिए आप कि भक्ति में वृद्धि हो,
ऐसे लोग इस मंत्र का अनुष्ठान करें। रुक्मिणी के पत्र का अनुष्ठान का विधि, शाम के समय जब अपने ठाकुर जी को आप शयन कराओ, उस समय ये 7 श्लोक उनके सामने पढ़ना। द्वारिका में आज भी ये परंपरा है। अपने यहां द्वारिकाधीश का मंदिर है, द्वारिकाधीश के स्वरूप को हम पधरा कर लाए हैं। जब भी आप द्वारिकाधीश की यात्रा करो, द्वारिका जाओ, और कुछ करो न करो चलेगा, द्वारिकाधीश को यह पत्र सुनाना प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इतनी शक्ति इस मंत्र में है। सुदेव ब्राह्मण गुरु का प्रतीक है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता कराने के लिए सदगुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर सदगुरु न हो या तो उसकी आज्ञा का पालन न किया जाए, मनुष्य करता बहुत है लेकिन प्रभु तक नहीं पहुंच पाता, केवल संसार में ही भटकता रह जाता है। प्रेम पत्र है तो रुक्मिणी कहती है, प्रभु आई लव यू। नेचुरली शी इज गोइंग टू से आई लव यू। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन एनी लव लेटर ऑफ द वर्ल्ड। She says, I love you, but how do I love you? ये प्रेम हुआ कैसे? पहला शब्द रुक्मिणी अपने पत्र में लिखती है, श्रुत्वा, ऑन लिसनिंग। नवधा भक्ति में भी भक्ति का पहला प्रकार है श्रवण भक्ति। श्रुत्वा, प्रभु की कथा सुनना, यह सबसे पहली भक्ति है। और क्या सुना है? गुणान। Dear God, I have heard about your qualities. श्रुत्वा गुणान। और तीसरा शब्द रुक्मिणी कहती है, भुवन सुंदर, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। विवाह तभी हो सकता है ना, एक रूप तभी हुआ जा सकता है when you feel that he is the best and when he feels that she is the best. मीडियोकर के साथ तो टिकेगी ही नहीं बात। भुवन सुंदर, आध्यात्मिक अर्थ में अगर कहें तो सृष्टि में जब भगवान सबसे श्रेष्ठ लगे तभी भक्ति की शुरुआत होती है। जब तक भगवान श्रेष्ठ नहीं लगता तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होती। और यूथ से मैं कहूं, मेरी यंग जनरेशन से कहूं, प्रेम करो तो गुणों से करो। रुक्मिणी कहती है, श्रुत्वा गुणान, आई हैव हर्ड अबाउट योर क्वालिटीज। आजकल लोग देख देख के प्रेम में पड़ जाते हैं। प्रेम में पढ़ना तो इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया प्रेम में पढ़ना। कॉलेज से घर पर आए उतने में 3 बार वो प्रेम में गिर जाता है और वो खड़ा भी हो जाता है 4थी बार गिरने के लिए। लोग कहते हैं ना, कम फॉल इन लव। ऑलवेज आस्क, हाउ कैन यू फॉल इन लव? यू शुड राइज इन लव, यू शुड इवॉल्व इन लव। यू कैन नॉट फॉल, यू कैन डेफिनेटली फॉल इन लस्ट बट नॉट इन लव। लेकिन आज संसार में जो लव के नाम पर चल रहा है ना, वो लव नहीं है, लस्ट है, मोह है। और मोह तो कीचड़ के समान है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदाते मोह कलिलम, मोह कीचड़ है, उसमें जो व्यक्ति गिरा वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। मोह जब आता है तो मनुष्य की बुद्धि के आसपास एक अंधेरा सा छा जाता है, एक बादल सा छा जाता है, वो सत्य को देख ही नहीं सकता। मोह रूपी अंधेरा है। रुक्मिणी कहती है, प्रभु मुझे प्रेम हुआ। क्या देखकर प्रेम किया इसने? मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि प्रायोरिटी अलग अलग होती है सबकी, तो विक्षेप हो तब एकाग्रता नहीं हो पाती। दूसरा श्लोक जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं। क्या देखा? कई सारे, और मेरे साथ प्रश्न भी आया है, परिवार से ही प्रश्न है ये भी, कि भावनाबेन और ममताबेन पारेख ने तो ये पूछा है कि रुक्मिणीना प्रेम पत्र विषे વિસ્તારપૂર્વક જણાવવા વિનંતી। અને આજની કન્યાએ જીવનસાથી પસંદ કરતી વખતે કઈ બાબત અને કયા ગુણ જોવા જોઈએ એ જણાવવા નમ્ર વિનંતી છે। तो बहुत संक्षेप में ये उत्तर दे दूं। दूसरे श्लोक में रुक्मिणी कहती है, मैंने 7 गुण देखे हैं प्रभु आप में, कुल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रविण और धाम।
मजाक में हमेशा कहता हूँ कि आजकल विवाह के पहले युवक और युवती को एक दूसरे को मिला देते हैं। अरेंज मैरिज जैसा अभी हुआ रहा नहीं पहले जैसा। पहले तो बड़े बुजुर्ग तय कर देते थे कि इनके ब्याह, और बच्चों को पता भी नहीं चलता था कि कौन है, पूछ भी नहीं सकते थे। बट इन मॉडर्न टाइम्स दे सी ईच अदर। अरेंज भी मैरिज हो, कहीं पर मध्यस्थी के वहाँ मिलना हुआ हो, तो लड़के लड़की को कहते हैं जाओ 1 घंटा घूम के आओ, और 1 घंटा घूम के लड़की जब घर पे पहुंचती, घर वाले तैयार बैठे हैं, कैसा लगा? 1 घंटे में क्या लगेगा? लगने वालों को लग जाता है 1 घंटे में भी, लेकिन जो सेंसिटिव हैं, जो संवेदनशील है, जो बुद्धिमान है, वो तय नहीं कर पाती 1 घंटे में। दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, 5वीं, 7वीं, और जैसे ये मीटिंग बढ़ती जाती है घर वाले इंपेशेंट होते जाते हैं। अब जल्दी से हाँ कह दो। कन्या कहती है लेकिन कैसे हाँ कह दूं? आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। अरे 7 बार तो घूम के आई, फिर लोग बात करेंगे तो इनके साथ घूमती थी, ऐसा होगा, फिर कोई हाँ नहीं कहेगा, जल्दी से हाँ कह दे तू उसको। कन्या कहती है लेकिन मुझे हाँ कहने जैसा नहीं लगता, तो ना कह दे। कन्या कहती है ना कहने जैसा भी नहीं लगता। देखने भेजते हैं लेकिन क्या देखना वो तो बताते नहीं। उलझन में पड़ी हुई एक कन्या घर में अपनी भाभी होती है, शी इज मोर लाइक अ फ्रेंड टू हर भाभी। 3-4 साल बड़ी है भाभी, उससे पूछती है भाभी बताओ ना, ये लड़का देखने के लिए जब हम जाए तो क्या देखना होता है? भाभी कहती है मुझे अगर पता होता तो मैं यहां आती। अब तो बात और बिगड़ गई। श्रीमद् भागवत आपको सिखाता है ये 7 बात देखना। सबसे पहले कुल देखना, फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। रक्त के संस्कार, कुल के संस्कार आज नहीं तो कल प्रकट होंगे। आजकल क्या होता है, विवाह के समय एक दूसरे को प्रभावित करने की इतनी वृत्ति होती है। दे ऑलवेज पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। दे विल वेयर बेस्ट ऑफ द ड्रेसेस, दे विल वेयर मेक बेस्ट ऑफ द मेकअप, दे विल बिहेव इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये पूरा एक नकाब है जो विवाह के बाद उतर जाता है और असलियत प्रकट होती है। तो असलियत क्या है, कैसे पता चलेगी? परिवार को देखो, जेनेटिक क्वालिटीज आएगी ही। और इसमें मैं ये भी कह दूं, समाज ऐसा हो रहा है आज कि कुछ विधर्मी प्रवृत्तियां ऐसी चल रही हैं कि हमारे समाज की बेटियों को फंसाया जाता है, उनको भगाया जाता है विधर्मियों के द्वारा और परेशान करके फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ये विश्व भर में ये दुष्ट प्रवृत्ति चल रही। किसी धर्म से मेरा कोई विरोध नहीं है, स्पष्टता कर दूं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर मेरे समाज की बेटियों को दुखी किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तो मेरी व्यासपीठ शांत नहीं बैठती। वो हमेशा एक रेड सिग्नल बताती है कि इससे रुक जाना। परिवार खास देखना, कुल कौन सा है। दूसरे कहा शील देखो, कैरेक्टर देखो। आजकल लोग पर्सनालिटी बहुत देखते हैं। वाव ही सो हैंडसम, ही इज ऑल 5 feet 8 inches, और इसके बाल कैसे हैं, हाईलाइट किए हैं, सच लवली ग्रीन आईज। हर 2 महीने सेलफोन का मॉडल बदलता है और मोटर बाइक पे आता है ऐसे, उसकी बाइक ऐसी है ना, आई जस्ट लव इट, द रूम द वे ही कम्स टू द कॉलेज। ये पागलपन में मत पड़ना, ये पर्सनालिटी है, वो आज है कल बदल जाएगी। लुक फॉर द कैरेक्टर, चारित्र कैसा है, शील देखना। उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो करना, चारित्र के लिए। तीसरे कहा रूप देखना, कुल, शील, रूप। रूप केवल चमड़ी का रूप नहीं, वाणी का सौंदर्य। विचार, वाणी का सौंदर्य कब होगा? जब विचारों का सौंदर्य होगा। जिसके विचारों में सौंदर्य नहीं, उसकी वाणी भी सुंदर नहीं हो सकती। देखिए, व्यक्ति जैसा सोचता है ना, ऐसा बोलता है। उसके विचार ही गलत हो गए तो उसका बोलना भी गलत हो जाएगा। विचारों का सौंदर्य, कर्तृत्व का सौंदर्य। भले 22-25 साल की उम्र हो, लेकिन इतनी उम्र में भी उसने कुछ करके दिखाया हो समाज में। कर्तृत्व के सौंदर्य को देखो, कुल, शील, रूप। फिर कहा विद्या। विद्या इज वे ऑफ थिंकिंग, इट्स नॉट जस्ट द डिग्री सर्टिफिकेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यू कैन ऑल्सो बाय इट फ्रॉम मार्केट। लेकिन वे विद्या इज वे ऑफ थिंकिंग, दे शुड बोथ ऑपरेट ऑन द सेम वेवलेंथ।
वय, उम्र, ही शुड बी एल्डर टू हर बाय एटलीस्ट 5 years। बहुत आवश्यक है। आजकल ये भी नहीं होता, बिकॉज दे आर इन द सेम क्लास। 4-6 महीने का डिफरन्स कदाचित हो। અને ઘણી વખત એરેન્જ મેરેજ હોય ને, કન્યાને પૂછે, કન્યા હવે તો બધું પૂછે ને, પહેલાં તો એવું તો દીકરીને ગાય, દોરે ત્યાં જાય। હવે એવું નહીં, હવે તો દીકરીને ગાય, ફાવે ત્યાં જાય, અને તોય કાંઈ ન કહેવાય। કોઈ પ્રપોઝલ આયા હો તો કન્યા પૂછતી હૈ, કોણ છે, શું નામ છે, ક્યાં રહે છે। આપણે કહીએ ચીંચ પોકલી। ચીંચ પોકલી? મારે કે ચીંચ પોકલીમાં નથી જવું, મારે તો ઘાટકોપરમાં જ રહેવું છે। અરે તું ઘાટકોપર હારે લગ્ન કરે છે કે તું માણસ સાથે લગ્ન કરે? લુક ફોર ધ પર્સન એન્ડ નોટ ધ પ્લેસ। ફિર કઈ કોલેજમાં ભણ્યો છે, અને કદાચ કેટલો મોટો છે, ઉંમરમાં 2 વર્ષ ફરક હોય ને, પેલો 2 વર્ષ મોટો હોય તો કન્યા ખભા ઉલાડીને કે બહુ ઘરડો થઈ ગયો, ઇઝ ટુ ઓલ્ડ, ઇઝ ટુ ઓલ્ડ। અરે તું આમને આમ ખભા ઉલાડતી રહીશ તો 2 વર્ષમાં તું એ he should be elder to her by at least 3 to 5 years, and there are reasons for it. There are social reasons, there are physiological reasons, there are emotional reasons, there are psychological reasons, there are financial reasons। समय और व्यासपीठ की मर्यादा, इसलिए कारणों की चर्चा में मैं जाता नहीं, ग्रंथ में लिखा है, आप पढ़ लेना। वय, फिर कहा द्रविण और धाम, संपत्ति भी देखना और धाम मतलब घर भी देखना। रुक्मिणी कहती है मैंने 7 बातें देखी हैं प्रभु, 7 में आप श्रेष्ठ हो, कौन सी कन्या आपके साथ विवाह न करेगी। 3रे श्लोक में रुक्मिणी ने अपना परिचय दिया, प्रभु आई बिफिट अ जेंटलमैन लाइक यू, अ लायन लाइक यू, एंड इन योर प्रेजेंस अ जैकल लाइक शिशुपाल विल कम एंड गेट मी अवे विथ, गेट मैरिड विथ मी, नो वे। कह तो दिया कि प्रभु आई बिफीट यू, मैं आपके योग्य हूं। 4थे श्लोक में उसने सिद्ध किया कैसे योग्य है, अपने सत्कर्मों का वर्णन किया। 5वें 6ठे श्लोक में उसने समझाया, प्रभु हमारे कुल में रिवाज है कि विवाह से पहले कन्या कुल देवी के दर्शन के लिए जाती है, वो गिरिजा टेकरी के ऊपर है पार्वती जी का मंदिर, मैं भी वहां जाऊंगी, आप आकर मेरा हरण कर लेना वहां से। 7वें श्लोक में रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मेरी इस विनती को सुनकर आप पधारेंगे तो वो मेरे लिए सुवर्णमय दिन होगा। आई कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर देन दैट, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू डोंट टर्न अप। आई लव यू, बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू लव मी टू। इफ यू डोंट टर्न अप ऑन दैट पर्टिकुलर डे, आई विल थिंक दैट देयर इज समथिंग मिसिंग इन मी। आई विल इवॉल्व माई सेल्फ। I may have to perform penance for 100 births, and I will do that. But I will evolve myself to such a degree that a day will come, you will come to take me away। भगवान ने पत्र पढ़ा, देखा कितना कॉन्फिडेंस है इसको। सुदेव ब्राह्मण से पूछा कब है ब्याह, सुदेव ब्राह्मण ने जब दिन कहा, प्रभु कहते बहुत कम समय रहा है। प्रभु गए हैं, रुक्मिणी का हरण किया, माधवपुर से परमात्मा ने वर यात्रा निकाली। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के ब्याह के समय शास्त्र है भागवत का कि मंगलाचरण बोलना चाहिए, मंगलाष्टक। पुस्तक में 5वें पन्ने पर अपने पास मंगलाष्टक है, हम साथ में उसे मंगलाष्टक के राग में बोलेंगे, कस्तूरी तिलकम श्लोक। लेकिन उसके पहले एक बात बता दूं, पारेख परिवार के द्वारा आयोजित चारों भाइयों के द्वारा जो प्रेम से, स्नेह से, अपने अपने भाव से जो ये उत्सव किया गया, कल इस उत्सव के ऊपर हम अल्प विराम रखेंगे। दुनिया का कोई भी वक्ता ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूरा ग्रंथ सुनाया है, और उसमें भी जब इतना प्रेशर हो अलग अलग जगह से, अलग अलग उत्सवों का, तो आई विल बी द लास्ट पर्सन टू से दैट आई हैव सेड टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू। नो, आई हैव नॉट टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स दैट आई कुड हैव एंड आई वांटेड टू। आई डोंट नो हुज लॉस इट इज, बट the fact is that I have not been able to say so many things that I wanted to। कल इस सत्संग के ऊपर हम अल्प विराम रखेंगे, पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि सत्संग की यात्रा तो चलती ही रहेगी। व्यासपीठ की भी परंपरा है और पारेख परिवार की भी परंपरा है कि सत्संग तो हमेशा होता ही रहेगा। कल अल्प विराम रखेंगे, फिर ठाकुर की कब इच्छा हो फिर और सत्संग आगे बढ़ेगा।
अंतिम दिन की कथा जो सुने उससे पूरी की पूरी कथा सुनने का पुण्य मिलता है, ऐसा हमारे लोग कहते हैं। अच्छा, तो अभी तक जो रह गए हो, હજી સુધી જે પહોંચી ન શક્યા હોય, ગરીબ ઘરવાળા, કુટુંબવાળા, આડોશી પાડોશી, તેમને કહો કે એક દિવસની કથા સાંભળીને 7 દિવસની કથા સાંભળવાનું પુણ્ય મેળવવાનો આ મોકો આવતીકાલે ठीक 3 बजे कथा का आरंभ करें। अब मंगलाष्टक साथ में सब बोलें और उसके बाद जो मैं कहूं सबको हाथ ऊपर करके सावधान ऐसा उच्चार जोर से करना है। यह सावधान का उच्चार हो जाए, तत्पश्चात मैं जब कहूं तब वर यात्रा आएगी। मैं अनुमति यहां से व्यासपीठ से दूंगा। बहुत अच्छी तरह से हम ये उत्सव मनाएंगे। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम्। शुभलग्नै सावधान वरकन्या सावधान कन्यादानदाता सावधान मदन फलबद्धा सावधान रत्नदीपक सावधान समय वर्ते। सावधान। આ મંગલાષ્ટકનો રાગ જ એવો છે, એ સાંભળે એટલે લાગે કે જાણે લગ્નના માંડવામાં બેઠા છીએ। અને વાત બી સાચી, આપણે ભગવાનના લગ્નમાં હાજરી આપી। એક વસ્તુ છે ભાઈ, કોઈના પણ લગ્નમાં જ્યારે જઈએ ત્યારે ખાલી હાથે ન જવાય, કંઈક ભેટ આપવી પડે। ભગવાનને શું ભેટ આપશે? આ મોટા લોકોને ભેટ આપવામાં તકલીફ હોય, એમની પાસે બધું હોય, શું આપે? નાના માણસના લગ્નમાં જવું ને તો ભેટ આપવાની બહુ સહેલાઈ, કુકર આપી દીધું, ઇસ્ત્રી આપી દીધી એટલે કામ પતી જાય, થર્મોસ આપી દીધું। પણ આ મોટા લોકો પાસે બધું જ હોય, એટલે આપણાથી જે બને એ શ્રેષ્ઠ આપણે આપીએ અને પછી કહીએ અમને યાદ કરજો। ભગવાનને પણ આપણાથી જે બને એ શ્રેષ્ઠ ભેટ આપીને પ્રભુને કહેવાનું, પ્રભુ અમને યાદ કરજો। પ્રભુ કોને યાદ કરે છે? ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जो मुझे याद करता है उससे मैं याद करता हूँ। कृष्ण रुक्मिणी के विवाह के समय मेरा अधिकार है, मांग कर आपके पास से दक्षिणा लेता हूँ, भेंट के रूप में लेता हूँ। भगवान को रोज याद करना बस। जिस मंत्र पर आपको श्रद्धा हो, जिस भगवान पर आपको श्रद्धा हो, उसकी एक माला रोज भगवान के सामने करना, और उससे बढ़कर और कोई भेंट हो नहीं सकती। कल आकर के भगवान की कथा आगे सुनेंगे। अब नीलेश भाई ले आओ वर यात्रा, ठाकुर जी ने पधराओ હવે આનંદથી ઉત્સવથી। બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की। ભાનુભાઈ વોરા ખૂબ સરસ, અને બેન તૃપ્તિબેન છાયા હશે જ। ભાઈ આપ મેદાન આપનું છે હવે ભાનુભાઈ, વર્ષો ચોક્કસ। પારેખ પરિવારને આંગણે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન, વૃક્ષમણી વિવાહનો પ્રસંગ અને આ કન્યા પક્ષને માંડવે ભગવાનની જાન લઈને આવી રહ્યા છે નવી મુંબઈથી શ્રી મોહનદાસ લક્ષ્મીચંદ પરિવાર। જાડેની જાન લઈને જ્યારે પધારે ત્યારે પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા જે કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે, તે દિવસે પણ મેં આપને કીધું હતું
કે ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પાપ ધોવાય, યમુનાનું પાન કરવાથી મુક્તિ મળે, પાપ ધોવાય, અને શ્રીમદ ભાગવત સત્તાનું શ્રવણ કરવાથી મુક્તિ મળે. આવું પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા કથાનું રસપાન કરાવ્યા ત્યારે સ્વર કિન્નર ગ્રુપ મુંબઈ તૃપ્તિ છાયા અને ભાનુવરણ કલાકાર રજૂ કરે છે વૃક્ષમણી વિવાહ પ્રસંગે લગ્ન ગીત. ભગવાનની જાન ભલા માણસ પૂજ્ય ભાઈ કીધું ને ભૂપેન્દ્રભાઈ કે ઓળખીતા પાળખીતા મિત્રોના લગ્નમાં તો થર્મોસ પકડાવો તોય હાલે. ભલા માણસ તો 33 કોટી બ્રહ્માંડનો નાથ જ્યારે પરણવા આવે છે કેવી તૈયારી. વાહ ભાઈ વાહ. આવો જી. વાળા ડિમાન્ડ કરે હો, અમને કેવી કેવી સગવડતાઓ જોશે. આવો પ્રવીણભાઈ. ત્યારે વરપક્ષ તરફથી શ્રી મોહનદાસ લક્ષ્મીચંદ શાહ પરિવાર નવી મુંબઈથી જાન લઈને આવી રહ્યા છે. દાદાજી મનોહરદાસ લક્ષ્મીચંદ શાહ સાથે પિતાશ્રી તરીકે હેમલભાઈ, માતા તરીકે ભાવનાબેન, દાદીમા તરીકે સવિતાબેન અને બહેનો પૂજાબેન, નિધિબેન, સિદ્ધિબેન, ફૈભાવ કુંદનબેન, ચંદ્રકાંતભાઈ, યામિનીબેન, રમેશકુમાર, મયુરીબેન, હિતેન્દ્રકુમાર અને 33 કોટી બ્રહ્માંડનો નાથ આવે આવે વસુદેવનો નંદ. અરે પૂનમ કેરો ચંદ. વાહ ભાઈ વાહ. જો વાહ ભાઈ વાહ. આવે આવે વસુદેવનો નંદ પૂનમ કેરો ચંદ્ર વિવાહ કેરી જ્યોત વિવાહ કેરી વર્ત કેવર આવે અંજવાળા રે, કેવર આવે અંજવાળા રે. આવે આવે વસુદેવનો નંદ પૂનમ કેરો ચંદ્ર વિવાહ કેરી જ્યોત વિવાહ કેરી વર્ત કેવર આવે અંજવાળા રે, કેવર આવે અંજવાળા રે.
આવે આવે વસુદેવનો નંદ પૂનમ કેરો ચંદ. અત્યારનો બરોબર આ જ્યારે ગોધોલી ટાણું થયું હોય અને ઠાકર મંદિરની ઝાલરો વાગતી હોય આ સમયના લગ્ન વર્ષો પહેલા લેવાતા હતા. અને પહેલાના જમાનામાં જાન કેટલા દિવસ રોકાશે એ નક્કી થતું નહીં, અને એ જાનમાં કેટલા માણસ આવશે નક્કી થતું નહીં. પરંતુ અમારા શાસ્ત્રીજી કેદારભાઈ જે વિધિ કરાવી રહ્યા છે, હંમેશા પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈની સાથે દેશ વિદેશમાં સાથે હોય છે. પ્રખર વિદ્વાન બ્રાહ્મણ છે, જેમનું કહેવું છે મને કે ભાનુભાઈ, શ્રી મહેન્દ્રભાઈ, ચંદ્રેશભાઈ, ભદ્રેશભાઈ, નિલેશભાઈ, આ બધા ભાઈઓને વિનંતી મંડપ નથી આવે, બરાબર ને કેદારભાઈ? હા, આવો મંડપ પૂર્ત કરી આપ આવી જાઓ. ત્યારે માંડવાનું એક ગીત લઈએ એ પહેલા મારી આપ દરેકની વિનંતી, જે ગીતો અહીંથી ગવાય છે ને ભેગા ગાજો, કારણ કે ગમે એના લગ્ન ને ભગવાનના લગ્નમાં ગયા ભલા માણસ. અને પાછળ બેટા બહેનો નહીં ભાઈઓ ગાવજો, કુવારા છે ને વાંઢાણી કે ભગવાનના ગીત ગાવ, તમારો મેળ પડી જાય ક્યાંક. ગાવ મારો બાપલો, વાહ ભાઈ વાહ, જો હા. હે એવા માંડવ રૂપાવ્યા મારે આંગણે, એવા માંડવ રૂપાવ્યા મારે આંગણે, ઓ જીરેવા માંડવ રૂપાવ્યા મારે આંગણે, એવા માંડવ રૂપાવ્યા મારે આંગણે, વાગેરુડા વાગેરુડા શરણાયું ને ઢોલને માંડવડે મારા મોતી વેરાણા મોંઘા મૂલના, એવા માંડવે રૂપાવ્યા મારે આંગણે, ઓ જીરેવા માંડવે રૂપાવ્યા મારે આંગણે. હે એવા દાદાને આંગણ રૂડો આંબલો, એવા દાદાને આંગણ રૂડો આંબલો, ઓ જીરેવા દાદાને આંગણ રૂડો આંબલો, એવા દાદાને આ શબ્દ, રૂડો આંબલો. આ લાઈન દરેક ધ્યાનથી સાંભળજો. પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ કીધેલું તમારું ગોત્ર અમારો મેઘાણી જેવો લખે છે, લગ્ન ગીતોના ઊંડાણ સમજવા જેવા છે. શું કહે છે? દાદાને આંગણ રૂડો આંબલો. આંબલો એટલે કુળની વંશાવળી, બાપના બાપા, એના બાપા, એના બાપા. અત્યારની પેઢી છે ને, અત્યારની પેઢી એ બધાને ક્રિકેટરના બાપા કોણ ખબર છે, આપણા દાદા કોણ ખબર નથી. મારા બેટાને રેસની ઘોડીઓના નામ ખબર છે, દાદો કોણ તો ત્રીજી પેઢીએ કોઈને ખબર નથી. પણ આંબાનું મૂળિયું ઈ દાદો છે, આંબાનું થળિયું બાપ છે. દીકરાઓ બિપિનભાઈ, દીકરાઓ આંબાની ડાળખી છે, તો દીકરી શું? દીકરી તો આંબાનું એક પાંદડું છે, પાંદડું. માટે મેઘાણીભાઈ લખ્યું છે ને, એક પાન તોડ્યું દાદા કાંઈ ન કહેશો, દાદાને આંગણ રૂડો આંબલો. વાહ ભાઈ વાહ, હાલો. હે એવા દાદાને આંગણ રૂડો આંબલો, એવા દાદાને આંગણ રૂડો આંબલો, ડાળે ડાળે હે ડાળે ડાળે ચૌકીજીના મોરલે માંડવડે મારા મોતી વેરાણા મોંઘા મૂલના, એવા માંડવે રૂપાવ્યા મારે આંગણે, ઓ જીરે
વાહ ભાઈ, આજનો પ્રસંગ જ્યારે નવી મુંબઈથી શ્રી મનોહરદાસ લક્ષ્મીચંદ શાહ પરિવાર આવી રહ્યા છે અને લગ્ન કોના છે હું તમે જાણીએ શું કહે છે. એવો માધવપુરનો માંડવો અને વળી જાદવ કુળની જાત પરણે રાણી લક્ષ્મણી હનલે તો તોરણ ગાવે ભગવાન પણ પરણે રાણી રૂક્ષ્મણી એ તો તોરણ ગાવે ભગવાન. આવી જ્યારે મોજ થઈ હોય, ધ્રિબાંગ ધ્રિબાંગ ઢોલ વાગતા હોય અને આનંદ કેવો હોય, હાલો ઘાટકોપરથી ઉપાડીને તમને ગોકુળિયા જેવા ગામડા મૂકી દી. જેવો મારો બાપલો, વાહ ભાઈ વાહ. હા હાલો હાલો વાલીડા રે હાલો મારા ગામડે વાગ્યા વાગ્યા રે વાગ્યા વાગ્યા ઢોલ છરણાયું મહેન્દ્રભાઈ ને આંગણે વાગ્યા વાગ્યા ઢોલ છરણાયું સીતાબેન ને આંગણે વાગ્યા વાગ્યા ઢોલ શરણાયું ચંદ્રેશભાઈ ને આંગણે વાગ્યા વાગ્યા ઢોલ શરણાયું ભાવના બેન ને આંગણે રાસ કેરી રમઝટ બોલાવો મારે આંગણે વાગ્યા 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 ઢોલ શરણાયું ભદ્રેશભાઈ ને આંગણે વાગ્યા વાગ્યા ઢોલ શરણાયું મમતા બેન ને આંગણે. ભાઈ 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 ઢોલ નારે બોલે બોલે હૈયું સબનું ડોલે 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 રે ડુંગરાયું રંગમાં ડોલે રે ડુંગરાયું રંગમાં એ સદણાયું ના સુરે સુરે જાગે પ્રેમ ઉરે ઉરે રાસ રમે સબ રંગમાં રાસ રમે સબ રંગમાં એ ફેર ફૂડલડી ફરતા ફરતા જાગ્યા પ્રેમ નાયું મંગ મારા આંગણે જાગ્યા પ્રેમ નાયું મંગ મારા આંગણે હાલો હાલો હવે હાલો મારા વાલીડા રે હાલો મારા ગામડે વાજા 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 ઢોલ શરણાયું નીલેશભાઈ ને આંગણે વાજા વાજા ઢોલ શરણાયું ફાલ્ગુની બેન ને આંગણે. ભાઈ ભાઈ જો પ્રેમ ને તો પ્રેમી જાણે પ્રેમ તો પ્રેમી બિચારે નાચે છે રંગ ભર્યા રાસમાં નાચે છે રંગ ભર્યા રાસમાં એ પ્રેમ ભર્યા સાથમાં મેંદી ભર્યા હાથમાં તાલે રમે સબ રંગમાં ભાઈ ભાઈ રમે સબ રંગમાં એ બોલ પ્રેમના ગમતા ગમતા થઈ કરતા ગીતો ગાતા જોબન ને માન ભર
ભાઈ વાહ જો ભગવાનનો વરઘોડો આવી રહ્યો છે અને સાથે મારો બાપલો મોજ કરો નાચો મેં કીધું ને આ તો 3 ભુવનનો નાથ પરણવા આવે છે મન મૂકીને નાચો મોજ કરી લો વાહ ભાઈ વાહ જો હા માંડવે જટ ડોડો ડોડો જટ ડોડો વાગે શરણાઈ ને ડોડો આગો વાલમનો વાર ડોડો જાને આવી માંડવે જટ દોડો દોડો જટ દોડો વાગે શરણાઈ ને ડોડો આવ્યો વાલમનો વાર ઘોડો એ દિશે કુંવર છેલ ચોગાળો છેલ ચોગાળો વાગે શ્રી પરને ફૂલ તોરો આવ્યો શ્રી કૃષ્ણજીનો વાર ઘોડો જાને આવી માંડવે જટ દોડો દોડો જટ દોડો વાગે શરણાઈ ને ડોડો આવ્યો શ્રી કૃષ્ણજીનો વાર ઘોડો એ ભાઈ ભાઈ જો કેસરીયો વાન જાણે કોડીલો કાન માથે મેવાડી મોડિયો સોહે
શરીરો વાન જાણે કોઢીલો કાન માથે મેવાજ કોઢીલો સોહે સુંદર શણગાર કંઠે મોતીનો હાથ પગે રાઠોડી મોજડી સોહે સુંદર શણગાર કંઠે મોતીનો હાર પગે રાઠોડી મોજડી સોહે देजो सन्मान आ तो मोटा ने जान जरा जोई लो ठाठर जवाड़ी देजो सन्मान आ तो मोटा ने जान जरा जोई लो ठाठर जवाड़ी हर खेवे वाय ने मलके वेवान लेवा आगा लाखेड़ी लाड़ी हर खेवे वाय ने मलके वेवान लेवा आगा लाखेड़ी लाड़ी हाथे श्रीफल ने फूल तोरो आव्यो श्री कृष्ण जी नो वरघोड़ो आगे शरणाई में ढोल रोड़ो आव्यो श्री कृष्ण जी नो वरघोड़ो आव्यो श्री कृष्ण जी नो वरघोड़ो आव्यो श्री कृष्ण जी नो वरघोड़ो आव्यो श्री कृष्ण जी नो वरघोड़ो। वाह भाई वाह। તમામ ભક્તજનોને વિનંતી જ્યાં જ્યાં આપને સ્થાન મળે ત્યાં મારો બાપલો બેહી જાઓ, ગોઠવાઈ જાઓ। અમારા અતુલ વિડીયો અતુલ જોશી એટલી સરસ વ્યવસ્થા કરી છે, જ્યાં બેઠા છો ત્યાં બેઠા બેઠા આપને ઝાંખી થશે। બેહી જાઓ મારો બાપલો, એલા બેહી જાઓ બેહી જાઓ બેહી જાઓ। એક જણાએ મને પૂછ્યું, મને કે ભાનુભાઈ આપણે દુનિયામાં આવ્યો કે દુનિયા આપણામાં આવીશ? મેં કીધું ભલામણ હાવ સીધી વાત છે। મેં કીધું આપણે દુનિયામાં આવ્યા, મને કે શું કરવું જોઈએ? મેં કીધું ગોઠવાઈ જવું જોઈએ। એટલે ગોઠવાઈ જાઓ મારો બાપલો, બેહી જાઓ। વાહ ભાઈ વાહ। हैं જ્યાં બેઠા બેઠા आपने ભગવાનના દર્શન થશે એવી સરસ મજાની આ સ્ક્રીન પર અમારા અતુલ વિડીયો અતુલ જોશી કરી છે, ત્યાં બેઠા બેઠા આપ ઝાંખી કરી શકશો। આવો આગળ વધીએ છીએ। आओ અમારા શાસ્ત્રીજી કેદારભાઈ પોખણા કરાવી રહ્યા છે। વાહ ભાઈ વાહ। પોખવાનું ગીત નહીં આપણે, આવો જી। कृष्ण जी ने पोखवाने सासू आवे रे, कृष्ण जी ने पोखवाने सासू आवे रे, जड़नी त्या झारी भरी ने सासू लावे रे, जड़नी त्या झारी भरी ने सासू लावे रे, शिरोटानी थाली भरी ने सासू लावे रे, शिरोटानी थाली भरी ने सासू लावे रे, सड़ियो साठो ने वड़ी त्राक रे, सड़ियो साठो ने वड़ी त्राक रे, गळे घट घाली ने ताण्यू छे नाक रे, गळे घट घाली ने ताण्यू छे नाक रे, ईंडी पींडी उतारी तेनी वार रे, ईंडी पींडी उतारी तेनी वार रे, उतारीने नाखी छे चारे पास रे, उतारीने नाखी छे चारे पास रे, दूषण मूषण ने ववाई रे, दूषण मूषण ने ववाई रे, सासूजीए पोख्या छे
વાહ ભાઈ વાહ. હવે દીકરાવાળા જાન લઈને આવે એ જાન મોડી પડે ને ત્યારે દીકરીવાળા કંઈક સંભળાવે હો. સાંભળજો બરાબર. હે બરાબર કે નહીં? નવી મુંબઈથી જાડેરી જાન લઈને તમે આવ્યા. પહેલાના જમાનો એવો હતો કિશોરભાઈ, કેમ કે અમારા વાડીભાઈ, હા, પેલા સુખી માણસના ઘરમાં સાફા હતા. પહેલા સાફો ઉછીનો લેવા જાય ત્યારે પરણે વરરાજો એવું હતું. હવે તો ભાડે મળે બધું. હે એ અમારે ત્યાં હજી એક એક ચોણીએ 5-5 વરરાજા પરણી જાય. હે પણ ગામને પાદરમાં ઈ જાનની રાહ જોવાતી. પહેલાના જમાનામાં મેં કીધું એ જાન કેટલા દી રોકાહે નક્કી થતું નહીં, જાનમાં કેટલા માણા હવે નક્કી થતું નહીં. અને જાન પેલા ગાડામાં આવતી કિશોરભાઈ, હાથી ઘોડા જ્યારે જાનમાં આવતા. ગામને પાદર જાનની રાહ જોતા હોય. થોડી જાન મોડી પડે અને દીકરીના મા બાપને ચિંતા થાય ધીરેન્દ્રભાઈ, અને ઈ દીકરીના મા બાપની ચિંતાને આનંદમાં ફેરવે ઈ આપણા કાઠિયાવાડના લગ્ન ગીત. શું કહે છે? આવો એક જરા થોડીક મોજ માણી 1 મિનિટ માટે. શું કહે છે? એવી સાંજ રે એ પડીને મારી લાડકડી નાવર વેલાયા, અમારે રૂક્ષ્મણીજી નાવર વેલાયા. સાંજ રે એ પડીને એ મારી લાડકડી નાવર વેલાયા. સાંભળજો મોઢું કેમ થયું, શું કહે છે? બરાબર ધ્યાન આપજો. હેમલભાઈ ને એ જીઘેરે સાપોર નો તો એવા ઈ રે કારણ જાન મોડિયા સાફો રે એ જોઈએ તો મારા ચંદ્રેશ ભાઈનો લેવો તો મારી લાડકડી નાવર વેલાયા. ભાવના બેન ને એ ઘેરે વેલડિયું નોતી એવા ઈ રે કારણ જાન મોડિયા. વેલડિયું એ જોઈએ તો મારા ફાલ્ગુની બેનની લેતી મારી લાડકડી નાવર વેલાયા. ભલા માણસ વિચાર તો કરો, ભગવાનના લગ્ન જ્યાં થતા હોય અને ત્યાં રૂક્ષ્મણજીના માતા પિતા કન્યા પક્ષ સમૂહ અને વરરાજાના પક્ષ તરફથી વર પક્ષ ભગવાન કૃષ્ણ વર પક્ષ થયું ને એ આનંદ આખો અનેરો છે. આવો એક ગીત એવું નહીં કે જેમાં બધા આખું કુટુંબ જે છે ને પંખીના માળા જેવો પારેખ પરિવાર એ આખા કુટુંબને આ એક ગીત દ્વારા ફૂલની માળા બનાવીને એક માળામાં પરોવી. આવો જી, વાહ ભાઈ વાહ. જો હે મંગળ ગાવો ને ફૂલડે વધાવો, આજ રૂડો અવસર ઘર આવો. આયો રે આજ રૂડો અવસર ઘરે આયો, આયો રે આજ રૂડો અવસર ઘરે આયો. ભાઈ કેર મંગળ અવસર સાકર વેચો આજે ઘર ઘર. ભવના બેન મંગળ અવસર સાકર વેચો આજે ઘર ઘર. કૃષ્ણભાઈ કેર મંગળ અવસર સાકર વેચો આજે ઘર ઘર.
વાહ વાહ ધીરેન્દ્રભાઈ, પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ કીધેલું ને, પેલા સ્વયંવર થતો હતો અને મા બાપને એમ લાગે કે અહીંયા યોગ્ય સ્થાન છે, એવા વરરાજાઓની પસંદગી થતી હતી. જમાનો અત્યારે તો ભાઈએ કીધું ને એ પ્રમાણે ઇન્ટરવ્યુ લેવાય. આ લોકો ઇન્ટરવ્યુ હું કોને ભૂખ પૂછતા છે. ગોહેલ એક જણની હગાઈની વાત આવી તો કે મારા છોકરીને ઇન્ટરવ્યુ લેવો, લઈ લે ભાઈ. આને છોકરીને પૂછ્યું કે ધાર કે તારી યારે મારી સગાઈ થાય તો છોકરી કે બહુ સારું, બે પરિવાર નજીક આવશે. છોકરે વળી છોકરીને સવાલ કર્યો કે તારી યારે મારા લગ્ન થાય તો છોકરી કે એની કરતા સારું આપણે બે હંપીને ભેગા રહે. હું છોકરો કે ધાર કે તારી યારે મારા લગ્ન થાય, હું ઓફિસે ગયો હું, તું ઘરે એકલી, મહેમાન આવે તો શું કરે. છોકરી ખાનદાર મા બાપની કીધું કે મહેમાનને આવકાર આપું, પાણીનો લોટો આપું, બેહાડીને ચા પીવરાવું અને આપણા બેયના મા બાપની આબરૂ રાખી દઉં. શું કીધું? આપણા બેયના, મારા એકલા નહીં, બેયના. સંસ્કારી ને. પણ છોકરે સવાલ કર્યો ઘરમાં ચા ખાંડ ન હોય તો ક્યાંથી પીવરાવે. છોકરી કે મહેમાનને ખબર ન પડે એમ સાડીમાં હંતાડી આજુબાજુમાંથી લઈ આવું પણ આબરૂ રાખી દઉં, ચા પીવરાવું. છોકરો કે ઘરમાં દૂધ ન હોય તો વળી છોકરીએ જવાબ આપ્યો કે એ મહેમાનને ખબર ન પડે આજુબાજુમાંથી દૂધ માંગી આવું, ચા બનાવીને પીવરાવું. છોકરાએ પૂછ્યું છોકરીને મહેમાનને જમવું હોય તો? છોકરી કે મને રસોઈ બનાવતા આવડે, રસોઈ બનાવીને જમાડું. કે ઘરમાં શાકભાજી ન હોય તો? છોકરી કે આજુબાજુમાં જ લઈ આવું, ખવડાવું. વળી છોકરે સવાલ કર્યો ઘરમાં લોટ ન હોય તો? છોકરી કંટાળ્યો. છોકરી કે લુખા, કડકા, ભૂખમરા, તારા ઘરમાં ચા નહીં, ખાંડ નહીં, દૂધ નહીં, લોટ નહીં, કોડા તને પરણે કોણ? હું ભૂખી મરી જાઉં, હાલ નીકળ, હાલ હાલતો થા. આમને મેં ઇન્ટરવ્યુ લેવા 42 વર્ષ વી ગયા અને 42 વર્ષે યાદ આવું કે પહેલા ઇન્ટરવ્યુ લીધું બરાબર હતી. ધીરેન્દ્રભાઈ એનો દરવાજો ખોખડ્યો તો ઓલી 2 છોકરા લઈને ઊભી હતી. એટલે ભાઈ છોકરા કે જો તમારા મામા આવ્યા, જો આવ્યા. હે જવાનો જુદો તો બહુ સરસ. અમારું કાઠિયાવાડનું એક લગ્ન ગીત શું કહે છે કે ઊંચો તે વરના જોશો દાદાજી. જ્યારે ગોર મહારાજ એમ કે તમારી દીકરીને યોગ્ય મૃત્યુઓ છે ત્યારે ગોરને લઈને દીકરીનો બાપ નીકળે. મેઘાણી લખે છે કે દીકરીના બાપને ક્યાંક દાદાનું સંબોધન કરતા લગ્ન ગીતો અમારે સૌરાષ્ટ્રમાં ગવાણા છે. હવે જોજો આ 4 વરની ના પાડે છે, કેવો વર માગે છે. આ લગ્ન ગીતનું ઊંડાણ સમજવા જેવું છે. પેલા તૃપ્તિબેન પાસે લગ્ન ગીત આપણે સાંભળીએ અને પછી આપણે સમજાવી શું કે છે. વાહ ભાઈઓ, આવો જી. ભર રે જો બનિયામાં બેઠા રે બેની બા, ભાઈ 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 દાદાએ હસી રે બોલાવી. ભર રે જો બનિયામાં બેઠા રે બેની બા, દાદાએ હસી રે બોલાવી. ઊંચો દેવરના જોશ મારા દાદા, ઊંચો તો નીત દેવા ભાંગશે. ઊંચો દેવરના જોશ મારા દાદા, ઊંચો તો નીત દેવા ભાંગશે. નીચો દેવરના જોશ મારા દાદા, નીચો તો નીત ઠેબે આવશે. નીચો દેવરના જોશ મારા દાદા, નીચો તો નીત ઠેબે આવશે. ગોરો દેવરના જોશ મારા દાદા, ગોરાને નીત નજર્યું લાગશે. ગોરો દેવરના જોશ મારા દાદા, ગોરાને નીત નજર્યું લાગશે. કાળો દેવરના જોશ મારા દાદા, કાળો તો કુટુંબ લજાવશે. કાળો દેવરના જોશ મારા દાદા, કાળો તો કુટુંબ લજાવશે. કિશોરભાઈ શું લખે છે? ઊંચો તે વરના જોશો દાદાજી. ઊંચો એટલે ઊંચાઈમાં નહીં હો, ઘણા ટેલિફોનના થાંભલા જેવા લાંબા હોય.
ઊંચો નહીં, હાઈટમાં નહીં તો ઊંચો એટલે અભિમાની, નીચો એટલે ગલુડિયા જેવો વરરાજો જાનમાં ગોતવા જવો પડે ક્યાંય ગયો એમ નહીં, જેના વિચારો નીચા છે એવો નહીં. ગોરો એટલે પોતાના વખાણ કર્યા કરે, અને કાળો એટલે જેના દિલમાં કપટ છે આવો નહીં. ઊંડાણ લગ્ન ગીત બહુ સરસ છે. અને હવે કેવા વરની પસંદગી કરજો, શું કહે છે દીકરી? વાહ ભાઈ વાહ, સાંભળો. વખાણ